अभी नेक्स्ट कौन से जाएंगे? पाकिस्तान। पीछे इंडिया बहुत प्यारा आ रहा है. The best experience in life. What is up guys, back with the new video. So at last I'm making a video after so many days in Dubai. So why I'm making this video at this time? Because from last 3 months I'm just postponing it, and I'll be saying that I'll make it tomorrow, I'll make it this day, I'll make it that day. Enough bro, we'll start it today. We'll start it now itself. So कल का प्लान ये है कि कल हम जा रहे हैं किसी खूबसूरत प्लेस, पता नहीं किधर जा रहे हैं, वो कल पता चलेगा. Now it's 7:30, so I'm coming back from my work, and tomorrow I have a holiday. So we are going tomorrow out, and I'll try to make every weekend a video. I will try, but let's see how it goes. I'll meet you tomorrow, and there is my bus coming. Like 2 PM in the afternoon, and look at the weather. Why today man, why today? चला आज का सब प्लान चौपट हो रहा है. मुझे उठना था 9 बजे, उठा हूँ 12 बजे बिकॉज ऑफ दिस वेदर. इट्स सो स्लीपी मैन. अभी मैं जा रहा हूँ डेरा मेरे एक फ्रेंड के पास, उसको वहाँ से पिक करेंगे. प्लान हो रहा है एक्सपो का. दुबई में और बारिश. Finally I'm with my friends, Karachi friends. ये उस पे डालेगा. This is Faizan and Maruf. So we are going to explore. Best experience in life. बहुत ही बेहतरीन अज़ान थी नहीं? बहुत माशाल्लाह, बहुत. लाइफ में पहली टाइम सुना मैं इसे अज़ान, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस. मैं तो पूरा खो गया था अंदर. बान में अभी कौन सा पेविलियन चलते हैं? यार सऊदी का मैंने बहुत सुना. चलो सऊदी अरेबिया चलते हैं.
कौन से जाएंगे? पाकिस्तान। तुम्हारा शहर, तुम्हारा मुल्क, हाँ बाद में इंडिया चलते हैं। बाद में इंडिया इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ठीक है, पहले पाकिस्तान चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो भाई, गाइड कराओ तुम्हारा पाकिस्तान के लिए। ये कौन से गाइड? ये नहीं, सामने ये दिखाओ ना, इधर इधर। अरे भाई, ताजमहल के अंदर आए क्या हम? ये शीश महल है। ये पाकिस्तान का ड्रेस पहना हुआ है। केटू हाँ, क्या है बोलो तो मेरे को। ये केटू, केटू का पहाड़ है। केटू। ये देख। उधर हाथ डाले तो आवाज आ रहा है। हाँ Oh, we are walking in the water. कैसा बोलते हैं रिव्यू कैसा? एक पर So right now we are going for Indonesia. Indonesia's yesterday was ahead of its time, where the discovery of the Spice Islands helped spark global trade. Alright, Indonesia pavilion is done. Indonesian pavilion was most of their cultural representation. It's very good. How was your experience, Faizan? वेरी गुड। तो दुबई ना बेसिकली ये कर रहा है कि पूरा देश दुबई में बसाने की कोशिश कर रहा है। जैसा है जैसे लोगों ने ग्लोबल विलेज बनाया। ग्लोबल विलेज तो मैंने नहीं गया, अभी जाना है। ये ग्लोबल विलेज जो ग्लोबल विलेज ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे आपको दूसरे दूसरे मुल्कों की चीज़ें बिकने को मिल रही हैं। और जैसा है वो आइलैंड पे ये बना है, पूरी दुनिया में आइलैंड में पूरा वर्ल्ड मैप बनाया लोगों ने। पूरा एक कोशिश। बेसिकली लोगों को मेन मकसद है कि इसको सेंट्रलाइज करना। हाँ, दुबई सेंट्रलाइज हो जाए और पूरी दुनिया इधर ही आए, पूरी पब्लिक इधर ही आए, पूरा टूरिज्म इधर ही है। हाँ इंडिया में बहुत रश है भाई, इंडिया में बहुत रश है। और सब कुछ देखने वाली। If you come to India, you have to be more, you have to give time here. It cannot be done in very quick. So finally घूम के हो गया है सब सारा। मतलब बहुत घूमना पड़ता है उधर, बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। 4-5 पवेलियन ही कवर किए। अभी बज रहे हैं 12 ऑलमोस्ट। अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 12। अभी जाके सोना है, कल सुबह काम पे भी जाना है।
And yeah, I'm not used to make this kind of videos. I'm just trying it, and hopefully I will try to post a video every weekend. Yeah, and from tomorrow I have to work, and I will meet you in the next weekend. See you. देखना ना मुझे मरवाएगा क्या तू